नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ने अफ़गानिस्तान के बारे में एक रुबाई में कहा था, आसिया यक पैकरे आबो गिलस्त, मिलत अफ़गान दरा पैकर दिलस्त, अस फसाद ऊ फसाद एशिया, अस कुशाद ऊ कुशाद एशिया। कि ये पूरा का पूरा जो एशिया है, एशिया का ख़ित्ता है, ये मिट्टी और पानी से बना हुआ एक मुजस्समा है, और इस मुजस्समे के अंदर अफ़गान कौम जो है ये दिल की हैसियत रखती है। अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पूरे एशिया में अमन होगा, और अगर अफ़गानिस्तान में बदअमनी होगी तो पूरे एशिया में बदअमनी होगी। अमूमन हम एक तवील अरसे से अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो जद्दोजहद है और तालिबान की जो तगोदौ थी 18 साल से, उसके बारे में गुफ्तगू करते चले आए हैं। और हमारे यहाँ तालिबान के नुमाइंदगान, अमारात इस्लामी के नुमाइंदगान और उनके स्पोक्स पर्सन भी गुफ्तगू करते चले आए। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख जो है उसकी तरफ भी हमें देखना है, इसलिए कि अब ये दोनों एक मेज़ पर हैं और दोनों में इस वक्त अफ़गानिस्तान की उस मुस्तकबिल की तलाश है। दोनों उस मुस्तकबिल तरफ बढ़ना चाहते हैं कि जिस मुस्तकबिल में अफ़गानिस्तान एक पुरअमन इस्लामी मुमलकत हो। आज हमारे मेहमान एक बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। ये अफ़गानिस्तान के इलाका खोस्त, जो कि बगलान सूबा का है, हेडक्वार्टर उसके करीब किला कोना के इलाके में उस ज़माने में पैदा हुए जब अफ़गानिस्तान जो था वो उस पर रूस की यलगार हो चुकी थी और अफ़गानिस्तान जो था वो एक ऐसी जंग में डाला जा चुका था कि जिस जंग का कोई सिरा मालूम नहीं होता था। इनका ख़ानदान हिजरत करके, जिस तरह लाखों और महाजरीन अफ़गानिस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए, वो भी पाकिस्तान आ गया। ये बुनियादी तौर पर ताजिक हैं। ताजिक वो कौम कि जिनका बारे में तस्वर किया जाता है कि फ़ारसी का पहला शायर जो था रुद की, वो ताजिक था, जिसकी वो मशहूर जो गज़ल है कि बुए जुए मूलियाँ आए थमी, याद यारे मेहरबां आए थमी। यहाँ आके इन्होंने इमाम आज़म हाई स्कूल से मैट्रिक किया। फिर उसके बाद इस्लामिक इंटरनेशनल अरबिक स्कूल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अंदर इन्होंने अरबी सीखना शुरू की और उनके अरबी का मुताले की वो सत्य थी, बहुत कमाल थे। और फिर उसके बाद इन्होंने 1992 में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेशावर से बीए का इम्तिहान पास किया और 1998 में आला तालीम के लिए तो इंग्लिस्तान चले गए और एसेक्स यूनिवर्सिटी है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस जो थे उसकी डिग्री हासिल की। इस दौरान तालिबान की हुकूमत थी और फिर तालिबान की हुकूमत के बाद 9/11 हो गया और 9/11 के बाद 2001 आ गया और 2001 में जिस वक़्त अमरीकी हुकूमत आई है तो इन्हें अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी थी बरतानिया की, उसमें सफ़ीर डिप्लोमेट लगा दिया गया। सफ़ीर तो नहीं, एक डिप्लोमेट की हैसियत से, सफारतकार की हैसियत से वहाँ रहे। वहाँ भी ये 2007 तक रहे। फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि दोबारा इल्म हासिल, क्योंकि बुनियादी तौर पर एक आलम आदमी हैं, पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। इन्होंने दोबारा एसेक्स यूनिवर्सिटी में PhD का दाखिला लिया और उनकी एक बहुत मशहूर किताब जो इस वक्त अफ़गानिस्तान पे बहुत अथॉरिटी रखती है, वो उन्होंने, उनका PhD का थीसिस था जो उन्होंने मुकम्मल किया, वो है स्टेट फॉर्मेशन एंड स्टेट फेलियर इन अफ़गानिस्तान। ये किताब छपी है, बार बार छपी है, एक खूबसूरत मुतरजम है, हयात सहाबा का तर्जमा किया है जो 6 वॉल्यूम 6 जिल्दों में है और तकरीबन 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल है, अरबी से फ़ारसी की। ये मशहूर किताब है जिसका उन्होंने तर्जमा किया। फिर उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम अफ़गानिस्तान के ऊपर नक़्द बर साख्त निज़ाम के बाद उसकी गुफ्तगू की, और जो किताब मुझे पसंद है उनकी, वो बड़ी कमाल है। वो बेसिकली आर्टिकल है लेकिन बहुत काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, डीकंस्ट्रक्शन द शिया सुन्नी डिस्कोर्स और डीमिस्टिफिकेशन। इसके ऊपर उन्होंने एक खूबसूरत बात की है। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ स्पोक्समैन और बहुत अहम तरीन शख्सियत और राइट उनके एडवाइज़र हैं अब्दुल्ला के, जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं अफ़गानिस्तान हुकूमत के, जनाब डॉक्टर मुजीब रहीमी साहब। ये उनका मुख्तसर सा तारुफ था, क्योंकि तारुफ पूरा प्रोग्राम ले सकता है। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर मुजीब रहमी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, पाकिस्तान में एक अरसा आपने गुजारा है, और जब आप अफ़गानिस्तान छोड़ के निकले थे तो वहाँ सोवियत यूनियन आया हुआ था, और जब आप अफ़गानिस्तान दोबारा वापस गए तो वहाँ अमेरिका आया हुआ था, और इस सारी अमेरिका, रूस, इन सारी चीज़ों में जो 31 साल गुजरे हैं, उसके अंदर आप अफ़गानिस्तान को जितना आपकी नस्ल जानती है कोई और शायद नस्ल ना जाने। आप बुनियादी तौर पर ताजिक हैं। मैं भी अपने उसमें कह रहा था जब मैं तारफ़ करवा रहा था कि आप को देख के रोदकी याद आते हैं, बुए जुए मूलियाँ आए धमी, याद यार मेहरबां आए धमी। याद यार मेहरबां का तस्वर ही उस ताजिक नस्ल से हमारे साथ है, और एक तवील अरसे से इस बर सगीर के साथ, और बल्कि खुसूसन पाकिस्तान के इस खित्ते के साथ आपका ताल्लुक़ है। मैं सिर्फ मौजूदा हालात से होता हुआ वापस पीछे जाना चाहूँगा। इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन मुज़ाकरात में एक तो यह है कि 22 नुकात, 22 डिफरेंट नुकात रखे गए। इनमें 2 नुकात सुना है ऐसे हैं कि जिस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ, बाकियों पे हो चुका है, ताकि आगे बात कैसे चले। तो क्या समझते हैं कि आप उन कौन से 2 नुकात ऐसे हैं, और कौन से ऐसे 22 नुकात थे कि जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं फॉर बैनुल अक़वामी जो है टॉक्स जो हैं आपके और अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान के, ये तालिबान के दरमियान? Assalamu alaikum. Thanks for having me in your program. We are glad to be here in Pakistan, talk with the government and officials, and the focus is on peace, as you mentioned in your questions. The negotiations already have started between the government of Afghanistan and the Taliban movement. This is the first round of the talks. In the first round of the talk, the focus is on the procedures, how to agree on procedures to conduct the talk and move on. Then the next phase will be agreeing on the agenda, and perhaps after that move on with the actual peace talks between the two sides. As you refer to the controversial issues, the two parties continue their meeting. There is not a deadlock as we are talking. The contact groups had their meetings yesterday. They discussed the remaining issues for more than 4 hours. Those remaining issues which they're talking on them right now is the reference point. If there is an issue, the suggestion from the Taliban was that it should be Mazhab Hanafi. As you know, we have Shia brothers in Afghanistan. We said if we make the Mazhab as a reference, then we should include Mazhab Jafari as well. There is a kind of agreement on this principle. It is not controversial anymore. The second issue is the agreement between the Taliban and the Americans. The Taliban are insisting that the talks should be based on that agreement. The argument from the Afghan government is that we can refer to it, and at the same time we can refer to the declaration between the government of Afghanistan and the US at that time, and as a reference to these two agreements and to the agreement and to the declaration which led to the talks between the two parties, and then we continue our negotiations on separate basis. But the Taliban, I think, insist that the talks should be based on that agreement. The talks between the two teams continue, and we are looking forward to find an acceptable and reasonable solution for this remaining issue. एक बुनियादी इशू जो है, जो कि अभी तक की तालिबान की गुफ्तगू से और बाकी मामलात में जो नज़र आता है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान गुज़श्ता कुछ 10-15 साल से एक आइन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के तहत हुकूमत बना रहा है, जिसमें इलेक्शंस भी होते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। जबकि तालिबान की तरफ से एक बहुत बड़ा सख्त मौक़िफ़ ये है कि नहीं, जमहूरियत की बजाय हम अपने तौर पे शरीयत का जो भी उनका निज़ाम कार है उसके मुताबिक हम उसको हल करना चाहते हैं, वो शुरायत है या जो कुछ भी है। आप क्या समझते हैं कि ये कोई रास्ता इस पे निकल आएगा कि ये आइन और ये जो जमहूरियत का जो प्रोसेस है उसके और इसके दरमियान कोई एक बीच की राह निकलेगी, या दोनों बराबर खड़े रहेंगे एक दूसरे के मुकाबले?
We have not reached to this point as we're talking right now. The focus is on the procedures, but you rightly pointed to this issue. It will be on the agenda once we move to the agenda and the talks begin between the two parties. As you have in the Islamic Republic of Pakistan, that notion of election, the will of the people participation, the election for different bodies to represent the people and govern the country, we do not see this contradicts the Sharia and the Islam. There is, I think, in all Muslim countries, or some of them, they are practicing this principle. In Afghanistan, we have been practicing this for years now, and the institutions of the state are taking root, and there are evidence in the last 19 years that this process is consolidating. The process of state building and the process of strengthening the state institutions, going through election processes and having elected bodies. You rightly pointed out that Taliban might have different opinion on this, but I think based on the constitution of the country and based on the desire of the people, we will insist on the will of people to decide the government and also how the system should be run, and that would be through election in one person, one vote. I hope that Taliban are changed and going through the process of change and visiting different countries, listening to different peoples. The general message is that it is not anymore feasible, or it is not the time that we run a country without election, without contesting each other through constitutional mechanisms and focusing or referring to one person as an absolute leader or as a tyrant who can decide the fate of a nation. This will be an issue, but I hope the people of Afghanistan are willing to find a solution for this once the talks begin. अच्छा, एक चीज और बड़ी अहम है जो अभी चंद दिनों से आगे आई है, जिसे मैं दो तीन चीजें साथ मिला के अगर एक बताऊं कि जैसे जैसे हालात बिल्टअप हुए हैं। एक शेड्यूल है विड्रॉल का कि अब अमेरिकी फोर्सेस जो हैं वो वापस जाएंगी। वो शेड्यूल तालिबान ने उनके साथ तय किया, वो के ज्यादातर शेयर नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक भी हो चुका हुआ है। अभी पिछले दिनों इमरान खान साहब ने भी बात की कि अब्रप्ट विड्रॉल जो है, फौरी विड्रॉल जो है, ये अमेरिकन फोर्सेस का ये पीस को खराब कर सकता है। ट्रंप का इलेक्शन आ रहा है बहुत जल्द, और उसको जल्दी भी है अपने से लगाने की। अफगान हुकूमत के तरफ से भी ये तस्वर किया जाता है कि नहीं, तालिबान जल्द अज जल्द है। आप क्या समझते हैं कि ये जो इस तेजी आई है इस सारी सूरत हाल के अंदर, इसमें क्या अमेरिकन और उसमें ज़ल्म खलीलजाद का वो बयान कि हम जब चाहेंगे अपनी मर्जी से फोर्सेस ले जाएंगे, आप क्या समझते हैं कि ये आपकी उस पर असरअंदाज हो सकता है अगर अमेरिका अचानक विड्रॉल कर जाए? We do agree with the statement of the Prime Minister of Pakistan that the withdrawal and reduction of forces in Afghanistan should be responsible and take the conditions on the ground into account. Any unexpected change in Afghanistan might have negative impact on the peace process and also on the stability of the country. But fortunately, our international allies, including the United States of America, have stated repeatedly that they are committed to a responsible mechanism when it comes to reduction of forces or withdrawal. The agreement with the Taliban, between the Taliban and the United States, is also condition-based. It is based on certain conditionality. If those conditions are met by the Taliban and by other parties,
then the process of withdrawal, reduction of forces will take place. That is on one hand. On the other hand, the government of Afghanistan is now strong than compared to the 1 decade before. We have a standing army, functioning institutions, and the deal or any interaction with the international community is based on the strategic partnership and bilateral and multilateral treaties we have with them, with the European Union, with the United States, with our neighboring countries. The consensus right now, as we are talking regionally and internationally, is that any move in Afghanistan at the international level, at the regional level, should be responsible and should take into account the realities on the ground, and it should not derail the peace process, and at the same time it should not adversely impact the situation on the ground. एक अब तक खैर ये पहली दफा बड़े अरसे के बाद इतना जिसे कहते हैं गर्मजोश किस्म का दौरा है अब्दुल्ला का और आपका, और जाहिर बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फिजा पैदा हुई है जो बड़े अरसे के बाद है। इन टॉक से, इन गुफ्तगू से जरा सा हटके मैं जरा सा थोड़े से माजी की तरफ जाना चाहता हूँ। अफगानिस्तान की हुकूमत के और पाकिस्तान की हुकूमतों के हमेशा ताल्लुकात जो हैं वो जिसे कहते हैं कि सर्द गर्म रहे हैं, गिले शिकवे वाले रहे हैं। मुझे वो उसका उर्फी का शेर बहुत अच्छा लगता है, आप जो कि फारसी बोलते हैं, मादरी जुबान है कि माशूक़ माँ बशेवाए हर कस मुआफ़क़स्त बामा शराब कीश और बज़ाहिद नमाज करत। तो हर दोनों को यही गिला रहता रहा है एक दूसरे से। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो आपका इस वक्त का दौरा है ये पिछली सारी चीज़ों से मुख्तलिफ है उन हालात से, और ये गर्मजोश ज़्यादा है? I do agree with you that there has been ups and downs in the relations between the two countries. But of course, we are neighbors, we are two Muslim countries, two brother countries. We have a lot in common, history, culture, traditions. You're hosting millions of our Afghan refugees, and the cooperation, the level of interaction at different levels are immense between the two countries. This time, what I want to emphasize that we should not trap in history, we should not live or stay with the Cold War mentality. Things might happen differently, or mistakes might have happened, but we're looking to open a new chapter. And that phase, that opening of a new chapter is feasible and real in Pakistan and also in Afghanistan. The leadership and the establishment in Pakistan unanimously expressing their willingness to support the peace process. They are stating clearly that an independent and prosperous Afghanistan is serving the national interest of Pakistan. They will not interfere in the internal affairs of Afghanistan. They are looking for an Afghan-led and Afghan-owned peace process, and they're ready to support. They have stated clearly, as I today heard from the foreign minister, that in peace there will be winners. Everyone will win, but in war and in conflict, everyone will lose. We do not have a loser if there is a peace in Afghanistan. That will help Afghanistan, that will help Pakistan, that will open new chapter of connectivity, trade and cooperation between South and Central Asia, and at the same time it will support Afghanistan. That willingness and that call is also visible within Afghanistan. The people of Afghanistan, the government of Afghanistan unanimously support the peace process, and they are in favor of a good and brotherly relation with Pakistan. All these changes, I think, has prepared the ground for that enthusiasm and courage, as you have stated at this time, and we are looking forward
for a successful visit with positive impacts on the ground and a visible change on the relations of the two countries. नाज़रीन, हमें इस मौके पर एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है और उसके बाद डॉक्टर साहब से बात जारी रहेगी। इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है और इंतहाई शानदार इल्म में इजाफा हो रहा है। मिलते हैं एक थोड़े से वक्फे के बाद।